Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we're going to solve 12th problem of final account with adjustments, intermediate first year accountancy. It is telling that prepare Veena Enterprises final account for the year ended 31/12/2018. Immediately after reading this, we need to draw two formats. पहला format trading and profit and loss account का रहेगा और दूसरा format balance sheet का रहेगा. After that, we will begin with our question. Question में दो divisions है. The first part deals with the trial balance. ठीक है, and the other part is our adjustment. Adjustment को देखते कि adjustment का एक rule click होना आपके दिमाग में. What is that? Every item of adjustment must appear twice. Adjustment के हर आइटम को दो बार लिखना है. So we will read this adjustment and we will do marking of our adjustment. Marking मतलब ये एडजस्टमेंट कौन से आइटम से रिलेट कर रहा, उसके बाजू हम एक मार्किंग लगाते. वी नीड टू पुट अ डॉट ऑन द रिलेटेड आइटम. ठीक है, तो रिजर्व फॉर बैड डेट्स ये हमारा दूसरा एडजस्टमेंट है. इट इज नथिंग बट आरबीडी. आरबीडी विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन डेटार्स. ठीक है, सो इन आवर ट्रायल बैलेंस वी विल सर्च फॉर डेटार्स. डेटार्स किधर है? 25,000 एंड वी विल मेक अ डॉट. डेटार्स के बाजू के एक डॉट लगा दो. देन आफ्टर दैट the next adjustment is depreciation on patents. So patents is our asset. Asset की वैल्यू कम हो रही, so we will do the marking to the patents. Patents के बाजू एक डॉट लगा डालो. Patents are here, that is 20,000. आपको इधर एक डॉट लगाना है. डॉट इज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजस्टमेंट. और डॉट हम ये क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज एडजस्टमेंट के हर आइटम को दो बार लिखना रहता. अगर आप स्किप कर दिए ये पार्ट को तो आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं होती. इसलिए marking of adjustment is very much important. Now let us see the next adjustment, that is outstanding rent. Outstanding rent, search करो where is rent and we can find rent here. Rent and taxes, that is 2,200. rent and taxes के बाजू एक डॉट लगाना है आपको. then after that commission receivable. कमीशन किधर है? देखो रिसीवेबल मतलब इट विल बी आवर इनकम. ठीक है, कमीशन रिसीवेबल मतलब कमीशन आना है, तो इनकम को हम क्रेडिट साइड सर्च करते. कमीशन इधर है 800. कमीशन के बाजू के एक डॉट लगा डालो. देन आफ्टर दैट द नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है, दिस एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू कैपिटल. वी विल सर्च कैपिटल ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ अवर ट्रायल बैलेंस एंड वी विल पुट अ डॉट. एक डॉट कैपिटल के बाजू लगाना है. नाउ आफ्टर दिस ये एडजस्टमेंट को किधर किधर दिखाते हम वो लिखना है. हर एडजस्टमेंट का आइटम दो बार लिखना है. सो लेट अस सी वेयर वी नीड टू राइट दीज एडजस्टमेंट्स. सो इट इज नथिंग बट द ट्रीटमेंट ऑफ अवर एडजस्टमेंट. पहले देखो, फॉर द फर्स्ट टाइम क्लोजिंग स्टॉक मस्ट बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट and for the second time closing stock must be shown on the asset side of balance sheet. Similarly, RBD, reserve for bad debts. For the first time we need to write bad debts on the debit side of profit and loss account, and for the second time we need to deduct RBD from debtors on the asset side of our balance sheet. Then after that depreciation. पहली बार profit and loss account debit side show करना है depreciation को, और दूसरी बार asset side balance sheet asset side patents में से माइनस करना है. The next adjustment is outstanding rent. For the first time we need to add it to the rent. तो रेंट हम किधर लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड रेंट में ऐड करो. दूसरी बार बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड शो करो. द फिफ्थ एडजस्टमेंट इज कमीशन रिसीवेबल. फॉर द फर्स्ट टाइम वी नीड टू ऐड कमीशन रिसीवेबल टू कमीशन. ये कमीशन रिसीवेबल जो 400 है इसको कमीशन में ऐड करो फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. And for the second time we need to show commission receivable as independent asset on the balance sheet. The last adjustment is capital, interest on capital. पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिखना है, दूसरी बार बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड कैपिटल में ऐड करना है. राइट, सो this was the explanation of our adjustments. Immediately after this we will begin with the format of trading and profit and loss account. ये इसकी हेडिंग रहेंगी. हेडिंग दो लाइन में लिखना है. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ MEC Veena Enterprises फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2018. ऑलवेज रिमेंबर दिस इज एन अकाउंट. अकाउंट के लिए DRCR लिखना मैंडेटरी है. सो वी आर गोइंग टू बिगिन विद द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड सिर्फ और सिर्फ दो आइटम्स लिखते हैं. पहला आइटम रहेगा सेल्स, दूसरा आइटम रहेगा क्लोजिंग स्टॉक.
नाउ लेट अस सर्च द सेल्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ अवर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड सेल्स है क्या, देखो यस 25,000, मगर सेल्स का अमाउंट लिखने से पहले सेल्स रिटर्न है क्या देखो, और सेल्स रिटर्न आपको हमेशा क्रेडिट बैलेंस में मिलती। सो हियर वी कैन सी रिटर्न्स दैट इज 800। तो ये 800 को 25,000 में से माइनस करना है, राइट। एंड द लास्ट आइटम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड इज क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा एडजस्टमेंट में मिलता, दैट इज 8,300। सो इमीडिएटली आफ्टर रीडिंग दिस we will move towards the credit side of trading account and we will write sales in the inner column 25,000, and from this 25,000 we need to subtract 800। तो net sales की वैल्यू कितनी होती, 24,200। then after this we will write closing stock, that will be the last credit item of trading account, that is 8,300। अब immediately after this we need to move towards the debit side। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 3 परमानेंट आइटम्स है, नंबर 1 ओपनिंग स्टॉक, नंबर 2 परचेजेस, नंबर 3 वेजेस। अब ये 3 आइटम्स क्वेश्चन में किधर भी रहने दो, सीरियल ऑर्डर में पहले हम लिख लेते। सो लेट अस सर्च फॉर द एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। एक्सपेंडिचर हमेशा ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड मिलता, तो हम डेबिट साइड सर्च करेंगे। ओपनिंग स्टॉक 9,000, परचेजेस 17,000, and immediately after reading purchases we need to search for purchase return, और purchase return हमेशा क्रेडिट साइड मिलता है ट्रायल बैलेंस में, जो कि 600 है, and we need to deduct this 600 from 17,000। परचेजेस की वैल्यू में से परचेज रिटर्न माइनस कर दो। then after this wages is 1,600 and we will write all these 3 items on the debit side of trading account। पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, so the value of opening stock is 9,000 and we'll write purchases in the inner column जो कि 17,000 है। 17,000 में से 600 जो कि रिटर्न्स है उसको माइनस करना है हमको, so the net purchases will be 16,400। then after that we'll write wages, ठीक है, the value of wages is 1,600। now we need to complete the debit side of trading account। trading account में debit side हम लिखते क्या, all the expenses which are related to goods when they are purchased। गुड्स खरीदते टाइम जो भी आपको खर्चे हो रहे हैं वो पूरे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, और ऑल एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री का हर खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है। नाउ लेट अस सर्च ऑल द एक्सपेंसेस व्हिच आर रिलेटेड टू गुड्स एंड फैक्ट्री ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है। लेट अस सी, पहला एक्सपेंडिचर हमको मिला कैरेज, देन आफ्टर दैट फ्रेट, देन आफ्टर दैट नो we are having only 2 expenses which are related to goods, ठीक है। so we are going to write these 2 expenses on the debit side of trading account, right। तो पहले क्या था हमारा कैरेज दैट इज 600, then after that freight that is 600। अब हमारा काम क्या है, we need to find out net gross profit, ठीक है। उसके लिए we need to do total, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों साइड का टोटल करो, जो टोटल ज्यादा है उसको दोनों तरफ लिख डालो। so let us see this, the total of credit side is more, that is 32,500। ये 32,500 हम डेबिट साइड भी लिख देते। अब ये 32,500 में से we need to subtract the debit total। डेबिट साइड का टोटल कितना होता करो, और 32,500 में से माइनस कर दो। माइनस करें तो क्या आता, ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू आती, एंड दैट इज 4,300 एंड इट इज मैंडेटरी फॉर अस टू ब्रॉट इट डाउन। तो कैरी डाउन लिखे तो ब्रॉट डाउन करना ये हमारी ड्यूटी है। तो the gross profit will jump from the debit side and move towards the credit side below the total, so we'll write gross profit brought down, that is 4,300। immediately after reading this our profit and loss account will begin, ठीक है। कैरी डाउन लिखे तो ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हो गया, ब्रॉट डाउन करते कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू हो गया। so let us see is there any income which is related to profit and loss account, और इनकम को सर्च करना है तो हम सीधा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड सर्च करते हैं। लेट अस सी, the first income is commission, then after that discount, yes we can see only 2 incomes, commission and discount। then let us search for income which is related to profit and loss account in our adjustment में भी हम सर्च करते हैं, is there any income which is related to profit and loss account, no। so directly we will move towards the credit side of profit and loss account and we will write those 2 incomes, ठीक है। पहले हमको इनकम क्या मिली, कमीशन, और कमीशन पे डॉट है, डॉट मीन्स देयर इज एन एडजस्टमेंट। अगर एडजस्टमेंट है तो इसके अमाउंट को इनर कॉलम में लिखना मैंडेटरी है।
तो कमीशन रिसीवेबल एडजस्टमेंट में दिख रहा आपको, सो वी नीड टू ऐड कमीशन रिसीवेबल टू द कमीशन जो कि 400 है, तो 400 ऐड करे बाद द वैल्यू ऑफ कमीशन विल बी 1200, देन आफ्टर दिस वी विल ऐड द नेक्स्ट आइटम दैट इज डिस्काउंट. Now we have completed all the items, all the credit items of profit and loss account. ठीक है, अब इसके बाद we will move towards the debit side and we will write salaries. Debit side पहला item salaries रहता profit and loss account में. So let us search salaries on the debit side of trial balance. Trial balance में debit side salaries है क्या, देखो. But in our question there is no salaries. ठीक है, तो हम उसको eliminate कर देते, छोड़ दो. अगर है तो पहला आइटम बनाना है उसको, अगर नहीं है तो छोड़ डालो. Now after that we will see what are the various expenditure which we need to write on the debit side of profit and loss account. Let us see. The first expenditure which is related to profit and loss account is insurance, then after repairs, then audit fee, then we are having bad debts, rent and taxes, printing charges, discount and speed post charges, legal charges. Total 9 expenses दिखे हम आपको, legal charges, speed post charges, डिस्काउंट, प्रिंटिंग चार्जेस, रेंट एंड टैक्सेस, बैड डेट्स, ऑडिट फी, रिपेयर्स, इंश्योरेंस. ये पूरे 9 एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड हम लिखेंगे. लेट अस सी द फर्स्ट एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज इंश्योरेंस 1500, एंड आफ्टर रिपेयर्स 1300, ऑडिट फी, इसके बाद क्या है, बैड डेट्स दैट इज 1000, ये ओल्ड बैड डेट्स है, राइट. देन आफ्टर दैट रेंट एंड टैक्सेस. अब रेंट एंड टैक्सेस पे डॉट है, इसीलिए मैं इसको इनर कॉलम में लिखा. डॉट दिखते कि एडजस्टमेंट में जाके वेरीफाई करना है व्हाट इज दैट डॉट. डॉट इज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजस्टमेंट, तो द डॉट इज आउटस्टैंडिंग रेंट. आउटस्टैंडिंग हम हमेशा ऐड करते हैं. सो द एक्चुअल रेंट एंड टैक्सेस आर 2800, देन आफ्टर दैट प्रिंटिंग चार्जेस 2600, डिस्काउंट 500, स्पीड पोस्ट चार्जेस. ठीक है, हर एक्सपेंडिचर हम लिख लिए जो हम आपको ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड दिखा which is related to profit and loss account. ठीक है, अच्छा एक छूट गया, legal charges, that also will write. Then after that immediately we will come to our adjustment. Adjustment में आके verify करो is there any expenditure or loss which is related to profit and loss account. ठीक है, adjustment में हम आपको दिखा RBD, फिर उसके बाद depreciation on patent, then interest on capital. There are 3 expenditures which are related to profit and loss account. तो directly we will write these 3 expenditures. ठीक है, स्पीड पोस्ट चार्जेस के बाद लीगल चार्जेस थे जो हम छोड़ दिए थे 700, देन आफ्टर दैट विल राइट आरबीडी. अब आरबीडी की कैलकुलेशन देखो, आरबीडी मस्ट बी कैलकुलेटेड ऑन द डेटार्स. क्वेश्चन में डेटार्स की वैल्यू 25000 है और 25000 का 5% 1250 होता, राइट. द नेक्स्ट आइटम इज डिप्रिसिएशन ऑन पेटेंट्स. पेटेंट्स की वैल्यू 20000 है, राइट, और 20000 का 10% डिप्रिशिएट हो रहा, सो द वैल्यू ऑफ 10% ऑफ 20000 इज 2000. देन आफ्टर दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कैलकुलेट पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वी नीड टू कैलकुलेट इट ऑन द वैल्यू ऑफ कैपिटल. देखो कैपिटल की वैल्यू ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड 1 लाख है और 1 लाख का 6% 6000 होता. नाउ आफ्टर दिस व्हाट वी विल डू द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड. हर चीज हो गई, अब या तो प्रॉफिट आता या तो लॉस. ठीक है, अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो लॉस आता, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट आता. सो लेट अस सी, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करो, जो टोटल ज्यादा आ रहा है उसको दोनों तरफ डाल दो. सो टोटल करे बाद डेबिट साइड की वैल्यू ज्यादा है क्रेडिट से, एंड दैट इज 21750. अब ये 21750 क्रेडिट साइड भी लिखना है हमें, जो ज्यादा है वो दोनों तरफ लिख दो. एंड फ्रॉम दिस 21750 वी नीड टू सबट्रैक्ट द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड. ये सबट्रैक्ट करें तो क्या आता, नेट लॉस, एंड दैट नेट लॉस मस्ट बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. तो नेट लॉस की वैल्यू कितनी है देखो, that is 14750. This is the value of net loss and it must be transferred to capital account. Now immediately after this we will begin with the balance sheet. अब balance sheet में liability side पहला item आता capital. अब capital पे कितने adjustment है, let us verify. ठीक है, the first adjustment of capital is net loss, then after that net loss के बाद interest on capital, then is there any drawings in our question? No, there is no drawings. तो एक एडजस्टमेंट है नेट लॉस और दूसरा एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सो वी विल राइट द वैल्यू ऑफ कैपिटल इन द इनर कॉलम ऑन द लाइबिलिटी साइड. ठीक है, अब लाइबिलिटी साइड मूव होना है एंड विल राइट द वैल्यू ऑफ कैपिटल दैट इज 1 लाख. एंड टू दिस 1 लाख
विल ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब इसका टोटल करें तो वैल्यू होता 1,06,000। अब ये 1,06,000 में से वी विल डिडक्ट नेट लॉस, दैट इज 14,750। इसको माइनस करे बाद 91,250 कैपिटल की एक्चुअल वैल्यू आती है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल मूव टुवर्ड्स द क्रेडिट साइड ऑफ अवर ट्रायल बैलेंस एंड वी विल सर्च फॉर रिमेनिंग लाइबिलिटीज। अब देखो इधर क्रेडिट साइड में क्या क्या लाइबिलिटीज है। बिल्स पेबल नंबर 1, डिस्काउंट बैंक ओवरड्राफ्ट नंबर 2, क्रेडिटार्स नंबर 3, आउटस्टैंडिंग वेजेस नंबर 4। 4 लाइबिलिटीज हमको ट्रायल बैलेंस में मिले। नाउ वी विल सर्च द लाइबिलिटीज इन अवर एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट एंड यस ओनली आउटस्टैंडिंग रेंट। तो टोटल 5 लाइबिलिटीज है और ये 5 लाइबिलिटीज को हम क्रेडिट लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में। लेट अस सी, बिल्स पेबल 3,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000, क्रेडिटार्स 4,000, outstanding wages 2,600, then outstanding rent 600. Then after this immediately we will move towards the asset side. Asset हमको डेबिट साइड सर्च करना है ट्रायल बैलेंस में। So let us search all the various assets which are present in our trial balance. The first asset is debtors. Then after that we have patents. Then after that furniture, machinery, and ट्रायल बैलेंस में 4 एसेट्स मिले, मशीनरी, फर्नीचर, पेटेंट्स एंड डेटर्स। ये 4 एसेट्स हमको ट्रायल बैलेंस में मिले। एंड लेट अस सी इन एडजस्टमेंट्स, क्लोजिंग स्टॉक एक है एंड कमीशन रिसीवेबल दूसरा है। तो देयर आर 2 एडजस्टमेंट, ठीक है, देयर आर 2 एसेट्स प्रेजेंट इन अवर एडजस्टमेंट। नाउ व्हाट विल डू, वी विल राइट ऑल दीज एसेट्स on the asset side of the balance sheet. पहले क्या था हमको, let us see debtors। अब debtors की वैल्यू में इनर कॉलम में लिखा because we are having bad debts, sorry RBD को माइनस करना है। माइनस करे बाद 23,750 debtors की वैल्यू आती है। then after that we will write patents जो कि 20,000 है। from this patents we need to reduce depreciation माइनस करना है and that is 2,000, so 18,000 इसकी एक्चुअल वैल्यू आती। फर्नीचर 16,000। Then after this we will write machinery 40,000, then commission receivable 400, then after that we will write closing stock। closing stock last asset है जो कि हमारा एडजस्टमेंट में मिला। इसके बाद what we'll do, we'll do the total। asset का टोटल आएगा 1,06,450 और लाइबिलिटी का टोटल भी सेम आएगा 1,06,450। from this we have completed the 12th problem of funnel account. In the next video we are going to deal with the 13th problem. Till then stay connected with ranks, the Institute of Commerce. Thank you.